39 assaults, 19 acts of vandalism, 42 incidents of harassment and 84 incidents of hate speeches against Muslims, all across India. A country celebrated for its diversity and secular values. Hi, I'm Minal Saeed and you're watching The Wire. A report by the Association of Protection of Civil Rights reveals that in the aftermath of the Pahalgam terror attack, a total of 184 anti-Muslim hate incidents took place in India starting from 22nd April till 8 May 2025. The report states that in at least 106 of these incidents, the Pahalgam attack allegedly acted as a triggering factor. In these incidents, 316 people have been affected either physically or psychologically. The most number of these incidents are reported to be from Uttar Pradesh, where 43 such incidents took place, followed by Maharashtra, Uttarakhand and Madhya Pradesh. In Uttar Pradesh, Aligarh, a 15-year-old Muslim boy was assaulted by a group of men while he was on his way back from school. He was forced to urinate on Pakistani flag. Here, have a look at the video. कोई देहाती मुसलमान का लौंडा है, जाहिद नाम है, और वो ये पोस्टर सब उठा के फाड़ के चला गया। दोबारा हम उसको पकड़ के घसीटते हुए लाए, दोबारा हमने ये पोस्टर लगवाए। इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए कितने पाकिस्तानी सुअर हैं और उनकी मानसिकता क्या है। मेरा सरकार से कहना है कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान में भी जितने भी जिहादी और सुअर के बच्चे बैठे हैं उनका भी फैसला इस देश में ही होना है। An FIR was later registered against Raju, a bookshop owner, Nitin, a grocery shop owner, and an unidentified man under various sections of Bharatiya Nyaya Sanhita, including rioting, voluntarily causing hurt, provoking breach of peace, and criminal intimidation. In another incident in Bhopal on April 26th, Railway Head Constable Nazar Daulat Khan was brutally thrashed by a group of intoxicated Hindu youth. According to the report, the police officer was on patrol around 2 a.m. when he noticed a group of young men consuming alcohol inside a parked car on the station premises. The attackers, after noticing Khan's Muslim name, allegedly hurled verbal abuses at him, targeting his religious identity. The confrontation escalated with the group physically attacking Khan, punching him and tearing his uniform. समझ नहीं आ रही, हम समझदार हो, तुम उधर नहीं, आपने गलत निकाला, आप कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी क्यों मार रहे हैं? ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पी। In a spate of attacks, several Kashmiri students were also targeted and assaulted in their hostels in Chandigarh, Uttarakhand and Himachal Pradesh. In Dehradun, Hindu Raksha Dal and other right-wing elements have allegedly issued written threats to several colleges demanding the expulsion of Kashmiri Muslim students and setting a chilling ultimatum. जय हिंदू रक्षा दल, पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये क्या कार्रवाई हुई है? Other incidents of Kashmiri Muslim vendors getting attacked also surfaced on social media. The member of various right-wing organizations can be seen assaulting these vendors, demanding them to leave. One such incident happened in Mussoorie, where 2 Kashmiri shawl vendors were heckled by the members of Bajrang Dal. लगी फिर से
तू है मेन तू है उड़ाओ फटाफट। नाम क्या तेरा? है तुम्हारे बहन से समझ नहीं आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? तुम्हारा समझ नहीं आ रहा? पुलिस वाले ने बोला था ना तुम्हें उस टाइम। बंद कर सब बार बोलते बैंक तब से बार बोलते तेरे को बैंक बंद कर कल भी समझाया तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं 4 दिन से बोल रहा बैंक को हटा है से। क्या है क्या इसका नाम दिखाई इधर का? कहाँ का एड्रेस दिखा इसका बैंक? जम्मू एंड कश्मीर। In another incident in Mussoorie itself, a group of Kashmiri shawl vendors were asked to vacate overnight, leaving goods worth rupees 12 lakhs. Several acts of vandalism targeting properties owned and managed by Muslim occurred across the country. These involved the destruction of madrasas and Muslim-owned shops, carts and other stalls. Additionally, a Bharatiya Janata Party MLA Balmukund Acharya vandalized a mosque in Rajasthan during a rally, while another mosque in Uttarakhand was also attacked with stone by Hindutva groups. In Kashmir, houses of suspected militants were demolished, which is prima facie a violation of Supreme Court's guidelines. According to APCR report, these incidents were neither random nor isolated. At a time when unity and solidarity was the need of the hour, the nation witnessed increased communal polarization. This is Minal Saeed Khan signing off. Please like, share and subscribe and continue watching The Wire for sane and informed news.